Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is a maths period, and for today our topic is prime factorization. So students, what is prime factorization? Students, when we break down a number to its prime factors, we call that the prime factorization of that number. जब भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं उस नंबर की। और नंबर हमारा कॉम्पोजिट भी हो सकता है, और कॉम्पोजिट नंबर को आपने उसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कॉम्पोजिट नंबर्स. As you all know, prime numbers are those numbers which have only two factors, one and itself. So prime factors can never be composite numbers. Clear? Now students, here we have an example. Prime factors of 16 using division method. डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू लुक फॉर द numbers of which 16 is multiple of. 16 जिस का भी मल्टीपल होगा वो नंबर 16 का फैक्टर होगा. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, as we all know, 2 8s are 16. So it means 2 is a factor of 16. As 16 is a multiple of 2, so 2 is a factor of 16. Now students, here we have now 8. And we have to look for the number. We have to look for the factor of 8. And that number should be prime number. Clear? As you all know, 2 4s are 8 and 4 2s are 8. But the difference is 2 is a prime number and 4 is a composite number. So we will take 2 4s are 8. 2 4s are 8. And here we have a prime number. This is prime number. 2 is a prime number. Now students, we have 4. And we have to look for the prime factor of 4. As 4 is a multiple of 2, 4, so we can say 2 and 4 both are factors of 4. But in 2 and 4, 2 is a prime number and 4 is a composite number. So definitely we will take 2. So 2 2s are 4. This is also prime number. Now we have 2. And 2 is a multiple of 2. So 2 is a factor of 2. 2 1s are 2. Clear? Now students, these all are factors of 16. Now students, जो हमने पहले किया था वो तो हमारी एग्जाम्पल थी. अब हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं और ये क्वेश्चंस आपने शीट पे करने हैं. लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. एंड इट्स पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 6 AC. Using division method, find the prime factors of the number. And number A is 84. So students, we have number 84. As I already told you, 84 is a multiple of 2. So 2 is a factor of 84. 2 के और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं. 84 के और भी फैक्टर्स हैं like 4, okay, 2. लेकिन 4 और 2 में स्टूडेंट्स 2 प्राइम नंबर है. So we will take 2. 2 42s are 84. Now we have 42
students, and we have to look for the factors of 42. 42 is a multiple of 2, 42 is a multiple of 4, 42 is a multiple of 6, 42 is a multiple of 7. So students, 42 is a multiple of 6 and 42 is a multiple of 7. 6 is a composite number, हम उसको नहीं ले सकते. So we will take 2. 2 21s are 42. आप 2 21s are 42 भी ले सकते हैं, आप 7 6 are 42 भी ले सकते हैं. But we here we take 2 into 21 is equal to 42. Now students, we have 21 and we have to look for the factors of 21. As you all know, 3 7s are 21 and 7 3s are 21. Both are prime numbers. We can take 3 7s are 21 and we can also take 7 3s are 21. So it's up to you. I am taking 3 7s are 21. 3 into 7 is 21. Now we have 7 and you all know 7 is only a multiple of itself. So 7 is a factor of itself. 7 1s are 7. So students, these are the prime factors of 84. 2 into 2 into 3 into 7. 2 into 2 into 3 into 7. Clear students? I have done question number A and you have to do question number C, which is 333. आपको इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन और ये आपने शीट पे करना है. ठीक है सारा काम. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स पेज नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ABC. Draw factor trees to show the prime factors of the given numbers. So students, here we have a number 15 and you have to look for the factors of 15, but those factors should be prime numbers, should be prime factors. Clear? So students, 15 is a multiple of 5, 15 is a multiple of 3, 15 is a multiple of itself. Clear? So we can say 3 5 and 15, these all are multiples, these all are factors of 15. Clear? But here we are taking 3 into 5. 3 5s are 15. Clear? You can see here we have 15 here and we are writing 3 into 5. 3 5s are 15. ये हमारा फैक्टर ट्री है और हमने यहाँ पे अपने प्राइम फैक्टर्स 15 के लिखे हैं 3 into 5. क्लियर? स्टूडेंट्स, एक और मेथड भी है जिससे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. लाइक अभी हमने डिवीजन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, तो हम इसी तरह डिवीजन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके भी ट्री बना सकते हैं. आई एम गोइंग टू tell you how to make a factor tree using division method. Okay, here we have 15 and 3 5s are 15. Now we have 5 1s are 5. Clear? Now students, as I have made loops here, you can see here 3 और 5 का लूप किया है हमने, तो हम 3 और 5 को एक साथ लिखेंगे. 3 5s are 15. Clear? Students, you can see 15 is a composite number, but 3 is a prime number and 5 is also a prime number. It means we have broken down 15 into its prime factors. Clear? Because we have not further any composite number. हमारे पास कोई एक further आगे composite number नहीं है कि हम उसको और मज़ीद break down करें. Clear? हमने इसको break down उस number को करते जाना जो composite हमें
नज़र आएगा, बट यहाँ कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, इट मीन्स 3 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स है. एंड यू कैन ऑल्सो चेक हेयर लाइक 5 3s आर multiplying 5 3s are 15. So class, that was your work, and this is your that was your work which you have to do on your sheets, and this is also your work, your homework. ये भी आपने अपनी sheets पर ही करना है. and it's page number 34, question number 6 EF and question number 4 GH on sheets. clear? और जो प्रीवियस हमने क्लास काम किया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ABC पार्ट है. ए क्वेश्चन मैंने किया है, BC आप खुद करेंगे, और ये सारा काम आपने शीट्स पर करना है. और जब ये स्टूडेंट्स आप अपना ऑनलाइन अपना विंटर वेकेशन वर्क सबमिट करवाने आएंगे, इसके साथ ही आपने अपना ऑनलाइन वर्क जो भी आप करेंगे मैथ्स का, वो भी आपने साथ ही सबमिट करवाना है अपने विंटर वेकेशन वर्क के साथ वीकली. क्लियर स्टूडेंट्स? ताकि आपका डेली रोज़ का रोज़ काम जो है वो चेक होता रहे, वीकली काम जो है वो आपका साथ साथ चेक होता रहे. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से. सो टेक केयर योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.